Until now, the discovery of electron was done, electron was discovered, and after that, the scientist goes to find out that what is present inside the center of the nucleus. So that is the discovery of the nucleus. Let's see what happened in the discovery of the nucleus. First of all, another fellow scientist, he tested the plum-pudding model. And as I told you people that Rutherford was a student of GIEGER Thomson. He studied under GIEGER Thomson, and he wanted to test the model of plum pudding presented by GIEGER Thomson. And he made a prediction. First of all, while he wanted to test that model, he made a prediction for that model. What that prediction was? The prediction was, we are going to fire positively charged particles on a piece of gold foil. Okay, there is a metal atoms of gold, and we are going to charge positive particles on that piece of gold foil. If the plum pudding model is correct, this is the prediction. If the plum pudding model is correct, most of the positive particle will go straight to the foil. Okay, most of the positive particle will go straight to the foil. A few pass close to the negative electron. Some particle will pass close to the negative electrons. Okay, and these positive particle will change direction slightly, because when the positive particle go and it meets the negative particle, definitely they are going to change its direction slightly toward the negative particles. So this was the prediction made by Rutherford. Rutherford again said, what? I'm going to fire positively charged particle at a piece of gold foil, and if the plum pudding model is correct, then most of the positive particle will go straight through the foil. A few particles will pass close to the negative electrons, and these particles which move close to the negative electron will change its direction slightly. Now he is going to perform an experiment for this. Okay, he is going to see if this prediction is correct or not. If his prediction is correct, then plum pudding model can be correct and the nucleus can be discovered. If the model is the plum pudding model is not correct and the prediction is not correct, then definitely it means that there should be more changes that should be made in the new model of the atom. So let's see what the experiment he performed. This was a setup I showed you people in the video as well, that Ernest Rutherford, Hans Geiger, and Ernest Madsen were the scientists who worked on this experiment. They made a setup like this. Okay, you can see the setup. The green color is the fluorescent detecting screen. The rays when strike the screen can present a spot on this one. In the middle, you can see the thin gold foil, and the black spot, the black box, you can see that black box is alpha positive particle emitter. Alpha particles mean positive particle. So the positive particles were emitted from that black box. The gold foil was present in the center, and then you can see a detective screen present around that gold foil, so that he can see that what is happening when he start bombarding that gold foil. Okay, so what happened? The setup, you see, you observe that when they started firing positive particles, that is the alpha particles at the gold foil, they observed that about one positive particles in every 10,000. Okay, 1 out of 10,000 particles were bouncing back. It was bouncing backwards from the foil. As it strikes the foil, so almost 10,000 particles were passing on, and only one particle was bouncing back. There's 1 out of 10,000 particles which bounced back. So there was something which amazed Rutherford, and Rutherford wrote about that. He said that it was quite the most incredible event ever happened to me in my life. This event, which event? In which the 10,000 particles were passing and one particle was bouncing back. Okay, so he said it is the quite most incredible event ever happened to me in my entire life. And he said that it was almost as incredible as if you fired a 15-inch or 38 centimeter artillery shell at a piece of tissue paper. Okay, means a machine gun, you are trying to fire at a tissue paper, and that machine gun's shell come back and hit you. So that much incredible. He said that एक टिश्यू पेपर को स्ट्राइक करना with what? With a machine gun, और उसकी जो shell है वो उस पे लगने के बाद वापस bounce back करे. It was quite like that. तो जो एक particle था ना,
वो एक पार्टिकल इस शेल की तरह था जिसको हम स्ट्राइक कर रहे थे, और स्ट्राइक करने के बाद वो पार्टिकल जो है वो वापस बाउंस बैक कर रहा था. सो दे वाज दैट मच इनक्रेडिबल कि रदरफोर्ड ने जो है उसके बारे में ये बात कही कि ये सबसे अमेजिंग इवेंट था मेरी लाइफ का. एंड इट वाज एज अमेजिंग कि जैसे 15 सेंटीमीटर 15 इंच या 13 सेंटीमीटर का एक मशीन गन से मैं शेल फायर कर रहा हूँ एक टिश्यू पेपर के ऊपर, और टिश्यू पेपर के लगने के बाद बजाय उस टिश्यू पेपर को क्रॉस वापस बाउंस बैक कर रहा है. So that is the one out of 1,000 or 10,000. Out of 10,000, the one particle was bouncing back. Now, सर डिटेक्शन स्क्रीन क्यों लगाई थी? डिटेक्शन स्क्रीन इसलिए लगाई थी कि जब पार्टिकल उस पर स्ट्राइक करे तो पता चले कि यहाँ पार्टिकल स्ट्राइक करे क्योंकि वो ग्लो होता है. As I shown you in the video, as the particle was striking, it was glowing. The screen is glowing. So when the screen glows, आपको पता चलता है कि भाई ये पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है. और अगर वो बाउंस बैक कर रहा है तो वो भी आपको अंदाजा होता है. अगर वो एंगल से कन्वर्ट कर रहा है तो भी आपको पता चलता है कि ये एंगल से यहाँ पर स्ट्राइक किया. सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वर नॉर्मली पासिंग स्ट्रेट ऑन फ्रॉम दिस, बट सम पार्टिकल्स वर आल्सो deviating with an angle and was bouncing backward. So that particle which were deviating or which were bouncing back, the quality or the quantity of those particles were much less as compared to the particles which were moving past straight on. Okay, so this basically this experiment allow Rutherford कि वो center of the nucleus के बारे में बात करे, ठीक है. And he gave a model of atom, and that model was quite incredibly explaining the structure of the atom. So we are going to see that what kind of evaluation Rutherford had done. Now, when he saw his evidence which we collected from the experiment, he said that now what prediction I have made was wrong. He made a prediction that some particles are going to bend toward the positive, the negative end, but they were not bending. What was happening? They were bouncing back. So the prediction was wrong, and his prediction was based upon Flum-Pudding model. Okay, so when his prediction is wrong, he said that Flum-Pudding model cannot be correct. He said that Flum-Pudding model में कोई ना कोई गलती है. It is a wrong model and it should be corrected. So Rutherford ने इसके बारे में मजीद सोचा, and then he came up with another and better model of the atom, and that model is known as Rutherford atomic model. Okay, this model was basically the experiment was carried in 1911 and 1912 and 1913. So यहाँ पर ये 3 साल जो थे, in these 3 years Rutherford was going to explain a lot of things about the atom, about the structure of the atom, about the center, the nucleus of the atom, about the positive particles. So many things were explained by Rutherford and his partners. Okay, so let's see what was the model of the atom that was presented by Rutherford. So Rutherford presented his model in 1913. Okay, and according to this model, this was very much clear model for a long time. But after that, in 1932, a new model was also presented. Okay, so according to Rutherford model, atom have a central nucleus. How did he said that atom has a central particle, a central nucleus? Because he observed that from the center of the atom, the particles were bouncing back. So as the particles were bouncing back, it allowed him to say that there is a central particle present in the atom, and that central particle was named as nucleus. So he said that the atoms have a central nucleus. The second thing, he said that most of the mass means the weight of the atom, is present in its nucleus, because the nucleus is dense particle. So when something is striking that particle, they are bouncing back, they are deviating. It means that there is something dense present, there is something weight present which is deviating those particles. So he said that most of the mass, most of the weight of an atom is present at nucleus. Okay. Point number 3 that Rutherford said, he said that the nucleus is positively charged. Because we know about electron were negatively charged particle that was already discovered. Okay, they were already discovered. But now we are going to discover another particles. So he said that the nucleus is positively charged particle. According to Nagaoka's model, according to Flum-Pudding model, they also said that atom is basically a positive sphere, and the electrons are present in that positive sphere. But what Rutherford did, Rutherford said that that positive sphere, that positive particle is much smaller as compared to the size of the atom.
So the size of the atom is much bigger, but the size of its positive particle is much smaller, and that is present in its center. So the nucleus is present in its center, and it is positively charged. Okay, and then he said that the nucleus is surrounded by an empty space. A big empty space is present. How he predicted that a big empty space is present? He predicted the big empty space because majority of the particles were passing straight. So it means that there was nothing in the center. That's why the particle was passing straight. ना इसने किस तरह से उसने predict किया? उसने जब वो rays strike करवाई थी, तो along with that he saw that majority की जो rays थी वो straight pass हो रही थी. तो उनके straight passage की वजह से he said that majority of the space is empty. Around the nucleus, majority of the space is empty because almost 10,000 particles were passing on straight. It means that there is an empty space present in the atom, and that empty space is much bigger than its center. So then he said the electron revolve in that empty space. Okay, so according to Rutherford model, Rutherford said that, again, the model is very much important. He said there are 4 points. Okay, these 4 points are: number 1, atom have a central nucleus. Number 2, most of the mass of an atom is present in its nucleus. Number 3, the nucleus is positively charged particle. And number 4, the nucleus is surrounded by a big empty space in which the electron moves. So these are the 4 points which was given by Rutherford. Ernest Rutherford has given the model in 1913. This model explains the nucleus of the atom. It explains the extranuclear space, that they have extranuclear spaces. This model explains the revolving of the electron in the orbital. But until now, protons are not discovered. Until now, neutrons are not discovered. So these particles were discovered later on in 1932 with the model, you know the modern model. And that modern model, these 2 particles were discussed, and a proton were discussed and neutron were discussed. So they said that the center particle is not only negative, but they also have a neutral particle as well. That was later on discussed. Okay. Now again, अगर किसी का यहाँ पर क्वेश्चन, ये रिपीटिंग है, सारी चीजें रिपीट हो रही है. अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो उस क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाए. नो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर उनको नेम कहाँ से आया, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स? नेम तो आप किसी भी बेस पे दे सकते हो. ठीक है, नेम देखो, नेम देने का बहुत सारे तरीके हैं. एक नेम देने का तरीका ये हो कि भाई साइंटिस्ट जो है वो अपने नाम के ऊपर उसको चीजों को नाम दे देते हैं. दूसरा, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई नाम दे देते हैं. ठीक है, कोई कैरेक्टर उनके अंदर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर नाम दे देते हैं. सो नाम देना साइंटिस्ट के ऊपर होता है कि वो किस चीज के ऊपर उसको नाम देना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन है. न्यूटन एक नाम है, एक शख्स का नाम है, लेकिन न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट भी है. ठीक है, सो पास्कल है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है. पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है. सो इट मींस दैट नाम जो है साइंटिस्ट या तो अपने नाम के ऊपर देते हैं या उन चीजों की प्रॉपर्टीज के ऊपर देते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी प्रेजेंट है, क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट है. तो कोई भी नाम उठा देते हैं, लैटिन जुबान का, ग्रीक जुबान का, इंग्लिश लैंग्वेज का, डिफरेंट लैंग्वेजेस का नाम उठा के उन प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर उनको नाम दे देते हैं. Sir, Nagaoka and Rutherford both proved that the plum pudding model is wrong. जी, yes, but Nagaoka's model was also wrong. Sir, why? Because he said that the center particle is very much big, and according to the model of atom, the central particle is very much smaller. You saw in the experiment ना कि सेंटर का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम. सेंटर पार्टिकल बहुत छोटा होता है. और अगर आप नागाओका के मॉडल को देखो तो उसमें आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा स्पेयर प्रेजेंट है जिसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहे हैं. तो एटम का सेंटर बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है. सर, नगाओका ने कुछ किया था, जैसे नगाओका ने कुछ भी इन्वेंट नहीं किया था ना, जैसे कुछ भी डिस्कवर नहीं किया था. नागाओका ने मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया था. मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया था और प्लम पुडिंग मॉडल को उसने कहा कि ये गलत है और उसने अपना एक मॉडल पेश किया. लेकिन उसका मॉडल भी जो है वो सही नहीं था. लेकिन मॉडल जो है, मॉडल जो साइंटिस्ट देते हैं वो मॉडल्स जरूरी नहीं है कि सही हो, वो प्रेडिक्शंस है. किसी सिस्टम के बारे में प्रेडिक्शंस होती है, तो प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है कि सही हो. ठीक है, अब रदरफोर्ड का मॉडल है वो काफी हद तक बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी 100% सही नहीं है. ठीक है,
100% सही मॉडल जो है वो नेल बोहर ने प्रेजेंट किया था, जो कि आज आप पढ़ रहे हो ना मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, वो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो है नेल बोहर ने प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली होता ये है कि प्रीवियस जो साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़ा थोड़ा काम करते हुए आते हैं, ठीक है। अब उन कामों को आगे बढ़ाना होता है, उसको सही साबित करना या गलत साबित करने वाली बात होती है, क्या वो मॉडल सही था या गलत था। सो ऑन दैट बेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ न्यू मॉडल। पुराने वर्क को लाजमी आप फॉलो करोगे, उसको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। नागाओका का मॉडल किसने चेक किया था? नागाओका का मॉडल रदरफोर्ड ने जो काम किया है, ठीक है, रदरफोर्ड का जो काम है, तो रदरफोर्ड के काम के अंदर नागाओका का मॉडल डेफिनेटली स्टडीड किया हुआ है, ठीक है। उसने फ्लम पॉडिंग मॉडल की स्टडी किया हुआ है, तो उसने जितने भी पुराने मॉडल प्रेजेंटेड थे उन मॉडल्स को स्टडी करने के बाद ही उसने एक नया मॉडल बनाया। क्लियर? कोई और प्रॉब्लम? ठीक है, डन। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है, आगे जो चीजें हैं। ये तो हो गया कि हमारे पास जो है वो मॉडल ऑफ न्यू मॉडल हमारे पास आया जो कि रदरफोर्ड ने प्रेजेंट किया था, and this model was presented in the year 1913. Okay, so this model was quite good model. This was quite good model because it explains you कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसमें मास प्रेजेंट होता है, एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं। These all things were right about atom, but definitely something were also missing in this model as well. That was being corrected by Neil Bohr in 1932, और फिर वो मॉडल हमें प्रेजेंट करके दिया गया कि भाई वो न्यू मॉडल ऑफ एटम हमारे पास आ गया। So let's see now explanation of Geiger and Madsen observation. ठीक है, Rutherford also explained Geiger and Madsen observation. The observation you see in the experiment, experiment में जो observation आ गई कि पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो हम बम्बार्ड कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे स्ट्रेट पास कर रहे हैं और बहुत सारे जो है बाउंस बैक कर रहे हैं, यानी बहुत थोड़े से जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं। So what he said that the positive particle that bounced back had hit a nucleus. जो बाउंस बैक हो रहे हैं, जो एंगल से जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उसने न्यूक्लियस को हिट किया है। जब वो न्यूक्लियस को हिट करेगा तो न्यूक्लियस एक डेंस पार्टिकल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डेंस पार्टिकल द इलेक्ट्रो पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव बैकवर्ड। तो वो आगे नहीं जाएंगे, वो बैकवर्ड आएंगे या वो एक एंगल से डिविएट हो जाएंगे। ओके, द पॉजिटिव पार्टिकल दैट ट्रेवल स्ट्रेट टू द फॉयल हैड पास्ड through empty space between the nuclei. According to the model, what he said, that there is a big empty space present in the nucleus. So the positive particles that are moving straight on from the atom, it means that they are passing from those empty spaces. So वो तमाम उन empty spaces से वो चीजें pass on कर रही थी, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने जो है दूसरे साइंटिस्ट को भी अपने काम के बारे में बताया, और नेल बोहर, जैसे मैंने आपको नाम बताया कि नेल बोहर वो साइंटिस्ट थे जिसने इसके मॉडल के बारे में सोचा, इन एम्प्टी स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस के बारे में सोचा, और उसने कहा कि ये एम्प्टी स्पेसेस जो हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस क्या है? ऑर्बिट्स है, शेल्स है। आपने आगे जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाए थे ना, उसमें जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल्स आपने बनाए थे, वो जो सर्कल्स है वो क्या है? वो शेल्स है, वो ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो ये काम किसने बताया था? ये नेल बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एम्प्टी स्पेस में नहीं मूव करते, बल्कि वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स व्हिच आर मूविंग अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स। सिमिलर द इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर ऑफ द electron are also revolving around the center of the atom, that is the nucleus of the atom, and their particular orbits, और हर ऑर्बिट के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट हमें पता है कि एक एटम के अंदर अगर पहला शेल है या पहला ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सकते हैं। अगर दूसरा शेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर तीसरा शेल है तो उसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर फोर्थ शेल है तो उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर फिफ्थ शेल है तो उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अगर सिक्स्थ शेल बनता है तो उसमें मैक्सिमम 64 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और सो ऑन आप उसको डबल करते जाओगे। इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ शेल्स जब इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंक्रीज करते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया में रिवॉल्व करेंगे, और वो पर्टिकुलर एरिया क्या होगा? उसका ऑर्बिट होगा, उसका शेल होगा। उस ऑर्बिट के बगैर वो किसी और जगह में रिवॉल्व नहीं कर सकते,
ठीक है, तो दिस वाज बीन एक्सप्लेन बाय नेल बोहर। तो नेल बोहर का मॉडल आपको डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने थोड़ी सी चीजें आपको नेल बोहर के बारे में बताई। दिस मॉडल यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 9। रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ोगे और आप नेल बोहर का मॉडल भी पढ़ोगे क्लास 9 के अंदर। तो ये आपको ज्यादा मजीद क्लैरिफाई होगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर आपको ये ज्यादा चीजें क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू inside the nucleus. Now what is present inside the nucleus? As Rutherford said that कि भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और पॉजिटिव स्पेयर है, पॉजिटिव पार्टिकल है। तो भाई एक्चुअली होता क्या है इस सेंटर के अंदर? एज वी नो, हमें ये पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एक स्मॉल पार्टिकल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज बड़ा है। सो फॉर दैट रदरफोर्ड कलेक्टेड सम एविडेंसेस, and what he did, he fired the alpha particle, the positive particles, into the air. Now inside the air, we know that there are gases present, and the major gas present in the air is nitrogen gas. Okay, so when he fired the positive particles in the air, the tiny particles were formed. Okay, here what formed? Tiny particles were formed, and those tiny positive particles, Rutherford realized that these particles have been come from the center of the nitrogen atom, from the nucleus of the nitrogen atom. So nitrogen atoms were present in the air. Is the particle which he fired up in the air. What happened? They struck the center of the nuclei of the nitrogen. So as they struck the nuclei of the nitrogen, they formed the particles. वहाँ से particles realized, particles जो है वो generate हुए, and he said that these particles are proton. उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। ये जो कहा कि ये पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, ये किसने कहा था? ये गोल्ड आइंस्टाइन ने कहा था। गोल्ड आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जस्ट लाइक जो आपने इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सपेरिमेंट देखा था, वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट जो है वो गोल्डस्टाइन ने परफॉर्म किया था। और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने प्रोटॉन्स के या पॉजिटिव पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज बताई थी कि प्रोटॉन्स क्या होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, ये कहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ये सारी चीजें जो है ये किसने बताई थी? गोल्डस्टाइन ने बताई थी। सो टिल देन प्रोटॉन्स हमारे पास डिस्कवर हो गए। ठीक है, 1920 तक हमने प्रोटॉन डिस्कवर कर लिए। और फिर 1932 में एक और साइंटिस्ट हमारे पास आया जिसका नाम चैडविक था, जेम्स चैडविक ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए जेम्स चैडविक ने ये बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ साथ एक और भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो उस पार्टिकल को जेम्स चैडविक ने किस चीज का नाम दिया? उसने उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया, यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम दिया। लेकिन ये याद रखना कि ये जो 1920 और 1932 में जो काम हुआ था, 1920 में हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, 1932 में हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, और उससे पहले हमारे पास जो है 1800 में हमारे पास जो है लेट 1800 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। ये सारा ये जो लास्ट के दो चीजें हैं, ये दोनों नॉर्मली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हुए थे। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसे हम रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यह एक्सपेरिमेंट भी आप क्लास 9 में पढ़ोगे। दैट रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज प्रेजेंट। वन इज पॉजिटिव रे, अदर इज नेगेटिव रे, एंड द अदर रे इज न्यूट्रल। सो बेसिकली जब वो पार्टिकल, वो रेज हमारे पास आ गई, तो उन रेज ने बेसिकली हमें एक रास्ता दिखाया कि देखो भाई, एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है, उसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी हो सकता है, और इसमें नेगेटिव पार्टिकल भी हो सकता है। एंड दिस बेसिकली लीड अस टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द थिंग व्हिच वाज प्रेजेंटेड बाय देम। तो अगेन, अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। Sir, can you repeat the number of electrons in 4th, 5th and 6th shell? आपने डबल करने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड और थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऑनवर्ड आपने क्या करना है? डबल करना है। यानी अगर फोर्थ शेल में जाओगे तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर आप फिफ्थ शेल में जाओगे तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास बढ़ेंगे, तो डबल डबल होते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकम इंक्रीज्ड एंड यू कैन अप्लाई अ फार्मूला एज वेल। 2n² का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। 2 × n, n इज द नंबर ऑफ शेल। लाइक फॉर एग्जांपल आपने थर्ड शेल में मालूम करना है ना,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसको स्क्वायर करें। सॉरी सेकंड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी, और थर्ड शेल में, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, फार्मूला लिख ले अपने पास आप लोग, 2n का स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर फार्मूला है। अब 2 का मतलब 2 तो आप अपनी जगह पर रहने दोगे, n की जगह आप शेल का नंबर लिखोगे। ठीक है, जैसे कि थर्ड शेल है तो 3 लिख दोगे और फिर उसका स्क्वायर कर लोगे। अब 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो थर्ड शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। आपने फोर्थ शेल का मालूम करना है, तो फोर्थ शेल में आप क्या करोगे, 2 फिर n की जगह 4 लगा दोगे और उसको स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 स्क्वायर 16 आता है, और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे, 32। So on you can go with that formula, आप इस फार्मूले से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले याद रखना सेकंड थर्ड शेल में सिर्फ 8 आएंगे। जी, न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स, नो सर, हाँ, न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया ना कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1914 के अंदर। उस एक्सपेरिमेंट में उसने रेडियो एक्टिव रेज को एक्सप्लेन किया था। तो उस रेज में उसने क्या करा था कि उसने एक लीड ब्लॉक लिया था, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया था और उससे रेज पास किए थे, करंट पास किया था। तो जब करंट पास किया उससे रेज निकली। वो रेज 3 टाइप की थी। वो रेज इस तरह से निकली कि लेट सपोज एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो कुछ रेज ऐसी थी जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गई, कुछ रेज ऐसी थी जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गई, और कुछ रेज ऐसी जो स्ट्रेट चली गई। ठीक है, उसने इनको रेज का नाम दिया, अल्फा रेज जो कि पॉजिटिव रेज थे, बीटा रेज जो कि नेगेटिव रेज थे, एंड गामा रेज जो कि न्यूट्रल थे, स्ट्रेट पास हुए। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर गोल्डस्टाइन और जेम्स चैडविक ने, इसका रेस के नाम, रेस अल्फा रेज, अल्फा पॉजिटिव रेज को कहते हैं। ठीक है, फिर बीटा रेज, बीटा नेगेटिव रेज को कहते हैं। फिर आता है गामा रेज, गामा रेज कहते हैं न्यूट्रल रेज को, जो स्ट्रेट पास होते हैं। जो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं वो नेगेटिव रेज होते हैं, जो नेगेटिव की तरफ जाते हैं वो पॉजिटिव रेज होते हैं, और जो स्ट्रेट जाते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो एक अल्फा रे आ गया, दूसरा बीटा रे आ गए, और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, गामा रेज आ गई। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो इसके बेस के ऊपर 1922 के अंदर गोल्डस्टाइन ने एक परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात हुई। जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ 1920 में, उसके बाद 1932 में एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट। मैं आप लोगों को सारा सेटअप बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू कैन गो एंड सर्च ऑन गूगल, आपने जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमें ये पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, इसके साथ साथ एक तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है सेंटर में, न्यूक्लियस के, जो कि न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो उस न्यूट्रल पार्टिकल को जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का नाम दिया था, जो कि 1932 में डिस्कवर किया गया था। और जब 1932 में ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए तो फिर न्यू मॉडल ऑफ एटम बना। और न्यू मॉडल ऑफ एटम क्या बना कि एटम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर protons, electrons and neutrons. The neutrons and protons are present in the center of the nucleus and the electron revolve around the nucleus in the shell. So ये जो मॉडल हमने शुरू में पढ़ा था, ये मॉडल इस तरह से डिस्कवर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर इरफान। वालेकुम सलाम मिस। अच्छा जी, बताइए, मेरा टाइम हो गया है? जी मिस बिल्कुल ठीक है, आप थैंक यू सो बताइए। मच। जी ओके।